Hello everyone, good evening. Hello, am I audible? Good evening, sir. Yeah, Yes, good you evening. are. Good evening, sir. Yeah, good evening. So without wasting our time, we'll move on to our today's topic directly, okay? So which is on element 1.1. Prior to that, do you all have any questions regarding the topics that you have covered in our last class? Yeah, any questions, please? No? Okay. Hmm. So today we will start with element 1.2, okay, which is on regulating health and safety. No? Mm. Uh, Sir, Yes, sir. sir, just wanted to ask how long this class will go today? Till till 1 hour? Till 10. Oh, okay. Actually, I have a meeting scheduled for 10:15, so Okay, today we great. will complete it shortly. Even tomorrow So, we'll not have a class. Okay, tomorrow I have planned for the patches as well. Okay, I had a okay, commitment, so that's why we just done. covered today's topic only, and I will ask you all to go through a scenario for our next session. Okay, Sure. Yeah, all right, thank you. yeah, welcome. Okay, so element 1.2, which is on regulating health and safety. So the learning outcome we'll get here is about legal reason for managing health and safety. Okay, what are the legal reasons for managing health and safety? What enforcement agencies do, and what happens if you do not comply with the standard? अगर आप legal standards को meet नहीं करते, if you're not following the legislative guidelines, what happens with the employer? Okay, what actions the enforcement authority do? Also, we'll learn about as for ILO, we'll learn the responsibility or the obligation placed upon employers and the obligation placed upon workers. Okay, the responsibility or the obligation placed upon workers as for Article 19 of ILO Convention C155, Article number 16 of ILO Recommendation R164. And we'll know about the source of information where we get to know about different national, okay, and international standards. First, we'll see the legal reason. Yeah. So the legal reason is about it's a preventive approach.
Okay, preventive detention. On the other means, other hand, we can say the means of detention a person without trial or convict by the court. Okay, so like without any trial, suppose to why there was no any legal guideline, okay, no any legal instruction from the place, people used to punish or detain, like they suppose they were represented in front of the courts, okay, without any trial, किसी भी तरह का ट्रायल किए बगैर people लोगों को डिटेंशन किया जाता है सर. So to avoid that, okay, the legal reasons is required. It's a punitive approach to inflict a penalty or punishment. Like punitive detention is to punish a person for offense that committed by the employer, okay, after trial and conviction of the courts. The compensatory effect of the law, as per Worker Compensation Act 1923, to compensate the worker, like वो लोग, the people, यानी कि जो workers and those who have victimized by the accidents or incident, okay, to compensate them, the law is helpful for them. And its principle is self-regulation, like own standard of act to be followed by the organization. Instead of waiting कि legislative body या government body कोई legal guideline लाए, the employers supposed to work on continuous improvement. You know the term continuous improvement, right? Like ताकि like gaps, भले ही कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, भले ही कोई इंसिडेंट ना हुआ हो, by analyzing the potential gaps in our operations, we should work on continuous improvement. उससे जो पॉसिबल दुर्घटना या इंसिडेंट्स है उसको हम प्रिवेंट कर सके. Okay, so the principle of self regulations, own standard or act to be followed by the organization. Okay, so these are the legal reason for managing health and safety. So here the law is very important because most of the organization, they're money minded. Okay, everybody want to get more profit. They don't care about like on by putting the life of people in a very risky condition. And I think most of the people who all are working somewhere, they know this is something happening most of the time. Okay, the employer to compromise with the safety to just get the benefit like production हमें बढ़ाना है. So they allow people to take the cut corner. Okay, they do not react on any providing any precautions, providing any safe environment, nothing. Most probably, they do not do such things. So to avoid this, law is important. So here the law protect our general safety. It ensures the right of citizens. Okay, against abuse by other people or by the organization. And the chief use of law is to it brings the uniformity and certainty, equality and impartiality. It protects from any kind of human error. किसी भी तरह का human error से बचाता है. Okay, it's a reliable, brings the belief. So here your legal reason basically concern about employer's duty of care in criminal and civil laws. So here the legal informant enforcement, it indicates the legal consequence result from the breaches in law. So here it becomes responsibility of employer to implement rules and regulations at the workplace for ensuring the safety at workplace. Okay, so these are the common legal reasons for managing health and safety. So here are the common regulations or the guidelines that might help you, okay, to get stay up to date with the legal requirements. Okay, to get up to date, what are the obligations placed upon employer? Like as per HASWA Act 1974, Health and Safety at Workplace Act 1974, as per MHSW Act 1999, Management of Health and Safety at Workplace Regulations, Reader 2013. Okay, ILO convention recommendations. Okay, based on statutory guideline and requirement as for the national laws and local laws. Okay, these are the guidelines. ये कुछ एग्जाम्पल है. ओके, साइड टू साइड वेरी करता है लीगल गाइडलाइंस, बट व्हेन यू आर ऑन द ट्रैक ऑफ यूके स्टैंडर्ड सिलेबस, यू हैव टू गो थ्रू दिस गाइडलाइंस. ओके, और जनरली आप गूगल में टाइप करेंगे हसवैक 1974, एमएचएस डब्ल्यू 1999, रीडो 2013, ये सारे आपको मिल जाएंगे. ओके, मैंने जो एचएससी का पोर्टल आपको ओपन करवा के दिया था वहां पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी. इवन मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ. ओके, वहां पे भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ फाइल मैंने अटैच करा के रखा है. वेट अ मिनट.
हम्म, okay, हो गया। Right. Okay. I've said a folder link and I've said a combined PDF. Combined PDF जो है वो प्रीवियस सिलेबस में सिविल सिलेबस का स्लाइड से ओके प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से वहां पे कुछ एडिशनल की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे फॉर द रेफरेंस पर्पस। एंड फर्स्ट जो ड्राइव दिया है देयर यू हैव द एक्सेस फॉर लीगल सोर्सेस। ओके लाइक ISO 45001 HSG 65। ओके दिस आर द जितने भी रिक्वायर्ड लीगल सोर्सेस है हमारे आगे आने वाली स्टडीज के लिए वो सारे यहाँ पे अटैच्ड हैं। ओके सो एवरीबॉडी शुड Share in डाउनलोड। the WhatsApp, sir. Sir, please, हाँ good. Sir, please share in WhatsApp also in B123 group. I will help you, sir. I was already shared with the WhatsApp, shared in a WhatsApp. Please check your WhatsApp. Okay, Sir, fine. I Let's am move not forward. in. Sir. Sir, I am not in 127 group, sir. So please share in 123 group. Okay, sure, sure. I will ask your course advisor to add you. Sir, thank you, Wait. sir. Hmm. Okay. Is it clear to you all the legal reason for managing health and safety? Next is roles and function of labor inspector or enforcement authority. So here keep it in mind that enforcement authority में वो सारे people आ जाते like your um yeah. So in labor enforcement authority your pollution control board okay जो जो आपके लोकल इंस्पेक्टर्स होते हैं ओके लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं ये सारे एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के पार्ट है ओके सो व्हाट डज द एनफोर्समेंट अथॉरिटीज डू द एनफोर्समेंट एजेंसीज दैट टेक द एनफोर्समेंट एक्शन against the duty holder if the fails to achieve the requirement of ILO convention and recommendation or national laws. Okay, so it may lead to enforcement actions by the enforcement authority. It include they may prosecute them, they may penalize, punishment before the court trial. Okay. So what are the common role of labor inspectors? उनका रोल क्या होता है? So main motive क्या है? To prevent any kind of occupational injuries or like to prevent any kind of incident in the workplace. Okay, so for that they use various methods. जैसे कि they will help you to enforce health and safety law. They provide policy, health and safety policy provide करते हैं. They provide advice, information and guidance on health and safety. They raise awareness in the workplace by influencing and engaging. Operating permissioning activity like license achieve करने में okay for major hazardous industry they help you on. They help you to deal immediately with the serious issues so that they can prevent the harm. Carry out targeted inspection and investigation of the workplace accident. They also take formal enforcement actions if organization not comply with the law. And also they can start criminal proceeding against the employer if you are not meeting the standard. Okay. So the typical role of the labor inspector, like they can investigate the accident when accident happen, or if anyone give any complaint against the organization. Okay, चाहे वो member of public हो or even staff, कोई भी अगर complaint आता है, they react, they investigate the workplace. Also, they require to take control of the to control the risk properly if you are not already comply with the law.
Okay, they can take action against the organization. Then they provide advice and guidance. Okay, they can help you to comply with the law, avoid injuries and ill health at workplace. They can take enforcement action against the organization in relation to any non-conformities. Okay, yeah, they can raising from the advice on stopping dangerous work activity for potentially taking prosecution where people are proved in serious risk. Also, they have the right that they can enter to your premises, okay, as well as they have right to talk the employees and safety representative, and they can exercise the power to help to fulfill their roles. Okay, an inspector and local authority officer, they prioritize most of the high risk business. Okay, like we can say the refinery, the construction project. These are the major, or the chemical manufacturing industries, the pharmacy. These are the major hazardous industries. So it depends on the level of risk your industry contents. Okay, based on that, they prioritize the industries. Okay, and also they operates fee for intervention cost. If you like when labor inspector visited your site, okay, if they identify like somewhere you are breaking the law, for example जैसे कि हमने sample scenario में पढ़ा, that they saw that there is no health and safety policy है ही नहीं, okay, it was only available for TPI. So in that case they are breaking the law. So when they visit on the site, they saw such practices, okay, they see such practices, they may take actions. Okay, they will help you to uh, refabricate the policy. They will help you to assist you on what extent and how you should share the policy with the workers, and the effort and the time they spent at your place to protect you from any enforcement action or to improve health and safety at your workplace. They will charge a fees. Okay, and that fee is known as fee for intervention. Okay, and this term you can use as a financial argument. Okay, as a financial loss as well. Okay, is it clear? Next is what are the source Yes, of sir. information? Okay. So what are the source of information of labor inspector? Like in general, वो आप कहाँ से उनको information मिलता है? From your previous performance. The concern that may be raised by your workers or public or others. Incident investigation. Reports of injury, diseases, and dangerous occurrence. And when they are inspecting, that what they do, they speak to the people like manager, supervisor, worker, whoever they replace, they will speak to them. They will take the sample of workplace activity, condition and practices. They access the relevant document. जितने भी HSC records है उसको access करेंगे. Check whether risk control measures are effective or not. They will also identify any breaches in law. Also, they will consider appropriate enforcement actions upon the organization. Next is what happens if you do not comply with the standard? What consequences you may face? Okay, so the enforcement actions they may take if I not comply with the standard, like issue verbal or advisory or one. Okay, issue written improvement notice or provision notice. Withdrawing the approval may be revoked. Wearing the license, okay, a condition or exemptions. Fines, enforcement authority can impose fine against the organization. Okay, which in enforcement agencies में जिससे कि हमने बात किया था पहले, लेबर इंस्पेक्टर, PCB authority, factory inspector, HSC inspector, they all are comes under known as enforcement agencies. Okay, they can still control the fulfillment of legal obligations and can impose punishment and penalties. Also, they can take both the actions, यानी कि आपको imprison भी कर सकते हैं, fine भी impose कर सकते हैं, and it's for both individual and employer, दोनों के लिए actions किया जा सकता है. Okay. Then they may ban from the job, okay, और business blacklist कर सकते हैं, insolvent, bankrupt या defaulter declare कर सकते हैं. Also, labor inspector help you to claim the compensation, okay, like based on the harm they can help the workers जो भी victim हुए हैं, they can help them to get the compensation like medical treatment या bonus वगैरह पाने के लिए, monetary benefits. डिफर्ड कंपनसेशन किसको बोला जाता है? द कंपनसेशन व्हाट एक्चुअली यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर. जैसे कि एज पर द कंपनीज पॉलिसी आपको जो है फॉर एग्जांपल 5 लाख का पॉलिसी के हिसाब से 5 लाख कंपनसेशन बनता है, बट द लॉस यू हैव फेस्ड इफ यू थिंक नहीं मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, सो व्हेन यू गो टू द कोर्ट और कोई भी केस वगैरह फाइल करते हैं जो भी विक्टिम हुए हैं, ऑन दैट केस एनफोर्समेंट अथॉरिटी हेल्प देम टू गेट द एडिशनल कंपनसेशन. तो जिसको यहाँ पे डिफर्ड कंपनसेशन बोला गया.
ओके, इसके सिनारियोस हम बाद में डिस्कस करेंगे. So what or why an organization is complying with the legal requirement? Okay, क्यों हमें legal requirement से compile करना चाहिए? Because to avoid improvement notice or provision notice, prevent legal authority of withdraw of approvals, to protect from varying the license conditions and exemptions, to avoid fine, punishment, penalties from enforcement agencies, to avoid prosecution in criminal court, like avoid fine, imprisonment for individual or organization, to avoid legal action against the employer or employer, to be banned from the business or the job. Okay. नेक्स्ट आते हैं आईएलओ. आईएलओ जनरली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. So ILO basically it was established in 1990. Okay, it built a constitutional principle that universal lasting peace that can only be established if it is based upon the social justice. So ILO dedicated to improve labor condition and living standard throughout the world. Okay, so it sets the level standards, develop the policies, advise program promoting safe working conditions. So if you see, we have ILO convention, recommendation, and code of practice. So what are the general difference between that? Okay, ILO convention is about the general statement, the general obligation placed upon the employer. Okay, that they need to the legal requirement or expectations being prepared considering the labor conditions, वर्कर्स के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या जनरल सेफ्टी स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना चाहिए. दैट्स व्हाट गिवन इन आईलो कन्वेंशन एंड इट इज कंप्लीटली बाइंडिंग. ये डिपेंडेंट है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को लेते हुए. while recommendation is elaborated form of convention. जो भी इंस्ट्रक्शंस और जो भी ऑब्लिगेशंस कन्वेंशन में दिए गए हैं उसके elaborated form है recommendation. Along with that, you will get some specific article or specific guideline which you may not found in convention. ऐसे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन मिल सकते हैं जो कि आपके कन्वेंशन में ना हो. ओके, नेक्स्ट ILO कोड ऑफ प्रैक्टिस. अगेन इट इज एलाबोरेटेड फॉर्म ऑफ कन्वेंशन बट इट इज स्पेसिफिकली इंडस्ट्री बेस्ड होता है आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस. लाइक ILO कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन, for machinery, for dock work, the specific industry base, how we can apply the best safety practices to fulfill the requirement of convention. कन्वेंशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप कैसे सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे कि इन कन्वेंशन दे टोल्ड यू दैट यू शुड प्रोवाइड सेफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी फॉर द वर्कर्स. सेफ इक्विपमेंट मशीनरी में आपका स्कैफोल्डिंग आता है. सो कोड ऑफ प्रैक्टिस सेज कि जो भी स्कैफोल्डिंग आप यूज कर रहे हैं उसका कितने हाइट में होना चाहिए, व्हाट शुड बी द विड्थ. ओके, व्हाट additional engineering controls you should provide for this on the scaffolding, okay, to fulfill the requirement of providing safe equipment and machinery to workplace. Okay, and again this guideline I look at कोई भी convention, recommendation or code of practice, it does not replace any नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. ये किसी भी स्टैंडर्ड को रिप्लेस नहीं करता है. ओके, ये कंप्लीटली यूके में लायबल है. इंडिया में भी इंप्लीमेंट करते हैं बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एवरीबॉडी इन इंडिया डू फॉलो आईएलओ स्टैंडर्ड्स. ओके, और ये स्पेसिफिकली ये कहता भी है कि हम किसी भी गाइडलाइन को रिप्लेस नहीं कर रहे. बट इफ व्हेन यू विजिट आईएलओ कन्वेंशंस रिकमेंडेशन यू कैन सी कॉमन गाइडलाइन इन योर. हम जब फैक्ट्री एक्ट या बीओसी ऑफ एक्ट पढ़ते हैं वहां पे जो भी गाइडलाइन है यू कैन सी द सब इक्विवेलेंट गाइडलाइंस इन आईएलओ कन्वेंशन रिकमेंडेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस. ओके Sir, हाँ. so is it mandatory for the companies to follow the ILOs or? नो नो नो, मैं बोला ना, इसीलिए ये किसी भी गाइडलाइन को किसी भी नेशनल स्टैंडर्ड को रिप्लेस नहीं करता है. ओके, इज इट क्लियर? Yeah, is it okay, sir? But my point is what? Okay, it not replace also, but is it mandatory for that one? But means नो नो. they follow the both the rules. But ILO they should have to be or they should ignore. ओके, They can. इट्स डिपेंड ऑन द स्टेट और डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हम ऐसे कुछ Okay. कमिट नहीं कर सकते, उनको मैंडेटरी फॉलो करना ही है ना. इन यूके दे माइट मैंडेटरी टू फॉलो आईएलओ बट इन इंडिया, ओके, और इन अदर स्टेट्स
Okay, they do not mandate to use ILO. Okay, रिप्लेस नहीं कर रहा है उसका मतलब तो वही तो है. ओके, ओके इंडिया में बट अभी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करते हैं, आईएलओ को कंप्लाई करते हैं. बट सर कुछ मतलब इंडिया में कोई तो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते होंगे ना. हमारे फैक्ट्री एक्ट फॉलो होता है, बीओसीडब्ल्यू एक्ट हम फॉलो करते हैं ना इंडिया में. ओके. या BOCW एक्ट बिफोर बीओसीडब्ल्यू एक्ट भी फॉलो होता है, फैक्ट्री एक्ट भी फॉलो होता है, स्टेट गाइडलाइंस भी फॉलो होते हैं ना. और आप यू शुड ओपन बीओसीडब्ल्यू एक्ट एंड ओपन आईएलओ कन्वेंशंस. सी सब में सेम ही गाइडलाइन है. ओके, एक ही इंडर सब में सेम ही गाइडलाइन है, बस सबने अपना अपने हिसाब से नाम और पैटर्न कर लिया. दैट्स ओके. Next is, okay, here it is, convention. If these conventions are ratified by national governments, okay, and they come in force. So legal binding on international territories, it's not bound for national territories. Okay, recommendation do not have binding force like convention, are not subject to ratification. So recommendation provide more detailed guideline on how convention could be applied. Recommendation can be autonomous, that is not linked with the convention. Okay, at the same time, ILO code of practice does no binding force, but rather than makes recommendation. This code does not replace national laws, regulation, international level standards or other acceptable standards. ये किसी भी standards को replace नहीं करता है. Okay. Next, if you see now, let me show you the obligation or responsibility placed upon employer or workers, okay, towards managing health insurance. ये मैं डायरेक्ट आपको ऑब्लिगेशंस आपके स्लाइड में भी अवेलेबल है. ओके, बट मैं डायरेक्ट आपको आईएलओ के पोर्टल से ओपन करके दिखाता हूँ. ओके, सो दैट हम जब IC2 का भी प्रैक्टिस करेंगे उस दौरान भी आपको आईएलओ की गाइडलाइन समझ सर्च करने में आसान. ओके, आप सिंपली जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आईएलओ कन्वेंशन 755. आईएलओ कन्वेंशन 755 आर्टिकल नंबर 16 ना, आर्टिकल नंबर 16 ILO Convention 755, which is on Occupational Safety and Health Convention 1981. Okay, if you see article number 16, they've given the obligation placed upon employer. Okay, then ILO recommendation R164. I will share this link on the chat box. मैंने शेयर कर दिया लिंक इसके. ओके, so if you see article number 16 of ILO Convention 755, what does it says? Okay, so employers shall require, if you see article number 16, employers shall require to ensure that so far as is reasonably practicable, workplace
machinery, equipment, and process are under their control, are safe without risk to health. एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल नंबर 16 ऑफ आईएलओ कन्वेंशन 755 कि जो भी इक्विपमेंट मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, जो भी वर्क प्लेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, वर्क प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं, मेक श्योर दीज आर सेफ जितने हद तक पॉसिबल है, दे आर सेफ विदाउट एनी रिस्क टू हेल्थ। ओके, जितने हद तक पॉसिबल है वो सेफ हो विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ओके, employers are required to ensure that so far as is reasonably practicable, chemical, physical, biological, and agents under their control without risk to health when appropriate measure of protection are taken. Okay, कोई भी chemical, physical, biological substance आप use कर रहे हैं, employers are ensure that these are under their control. Okay, and appropriate precautions have been taken. For example, if I am handling a chemical container, okay, so what responsibility employer becomes here? That they should ensure कि वो जो chemical use करे, they should rate the chemical, the substance should have the MSDS. Everybody should train on use of that chemicals. Appropriate gloves need to be provided for the workers while handling those chemicals. Appropriate manual handling training need to be provided so that they can handle this chemical safely. Okay. Next, employers are required to provide wherever necessary adequate protection clothing and protective equipment to prevent so far as reasonably practicable and risk of accident or adverse effect on health. एम्प्लॉयर के ऊपर यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लाइक एडिक्वेट पीपीईज प्रोवाइड करें जितना हद तक पॉसिबल हो। ओके, सो दैट एक्सीडेंट का जो एडवर्स इफेक्ट है उसको एलिमिनेट किया जा सके। ओके, and in ILO recommendation R164 recommendation number 10, those obligations have been elaborated, like how these obligations of ILO convention 755 article number 16 can be implemented appropriately. So obligation placed upon employer with the view of achieving objectives set forth with article 16 of convention might include as appropriate different branches of economic activity and different type of work as following, like to provide and maintain the workplace, machinery, equipment, and use work method which are safe without risk to health as is reasonably practicable. जितना हद तक possible हो safe workplace provide किया जाएगा इसको, like free from any kind of hazard, noise, manual, किसी भी तरह का hazard से free किया जा सके, safe machinery provide किया जाए, safe equipment provide किया जाए, right working method like PTW हो गया, SOP हो गया, ये सारे right working methods adopt किया जा सके, to give necessary instruction and training taking account of functions and capacities of different category of worker, अलग अलग वर्कर के काबिलियत को ध्यान में रखते हुए ओके adequate instruction and training किया जाए, provide adequate supervision of work practices and application and use of occupational health and safety measures. Okay, adequate supervision provide किया जाए, institute organizational arrangement regarding occupational safety and health working environment, adapting size of undertaking and nature of its activity. Okay, like types of work उसको ध्यान में रखते हुए you should provide institutional arrangement like types of organization you have, what is the size of your organization, considering the number of people you have, you should provide adequate arrangements accordingly. Okay, to provide without any cost adequate personal protective clothing and equipment which are reasonably necessary when hazard cannot otherwise prevented or controlled. जब हजार कंप्लीटली कंट्रोल या प्रिवेंट ना किया जा सके तो एडिक्वेट पीपी प्रोवाइड करना, ensure that work organization in particular with respect to the working hours rest break does not adversely affect occupational health and safety. एम्प्लॉयर के ऊपर ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स को सही रेस्ट ब्रेक दिया जा सके, एडिक्वेट वर्किंग आवर लाइक 8 वर्किंग आवर जो स्टैंडर्ड है एज पर आवर सिनेरियो, जब आपको सिनेरियो मिलेंगे वहां पे आप 8 वर्किंग आवर्स ही कंसीडर करना। ओके, so as per the standard they should allow only 8 working hours, they should allow adequate rest break, it should not adversely affect the health and safety of the workers, take reasonable measure with the view of eliminate excessive physical and mental fatigue. Okay, सारे रीजनेबल मेजर लेना चाहिए ताकि हम वर्कर्स के अगेंस्ट एक्सेसिव फिजिकल या मेंटल फटीग से उनको प्रोटेक्ट कर सके।
to undertake studies and research or otherwise keep abreast of scientific and technical knowledge that necessary to comply with the following clause. जो ongoing standard है उसको meet करने के लिए adequate scientific and technical knowledge wherever necessary, जहाँ पे भी जरूरत है continuous improvement के ऊपर scientific and technical knowledge share करना और उसके continuous improvement के ऊपर काम करते रहना. Okay, so these are the obligation placed upon employer. Is it clear? बताइए. Any questions on it, please? Next, अभी एम्प्लॉयर का ना. नेक्स्ट इज द ऑब्लिगेशन प्लेस्ड अपॉन वर्कर्स एज वेल. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स के ऊपर भी दिए गए हैं. So what are the obligation placed upon worker as per ILO Convention C155 article number 90? Okay, so there shall be arrangement at level of undertaking under which workers in the course of performing their work cooperate with the fulfillment by their obligation the employer by their employer of the obligation placed upon them. वर्कर्स के ऊपर सो वर्कर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वट एवर द ऑब्लिगेशन, जैसे कि इफ योर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर हैज ऑब्लिगेशंस कि व्हाइल ड्राइविंग यू शुड नॉट यूज मोबाइल फोन. सो वर्कर को ये ऑब्लिगेशन है कि दे शुड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन. इफ एम्प्लॉयर गिवन है एसओपी फॉर सेफ मैनुअल हैंडलिंग, सो वर्कर्स का क्या जिम्मेदारी है? दे शुड फॉलो दैट एसओपीज. ओके, and representative of the worker is undertaking cooperate with the employer in the field of occupational safety and health. Who is the representative of the workers? किसको बोला जाएगा? Can anyone please let me know? वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? Contractors. हाँ जी. Contractors. Contractor No. is super. No. Supervisor. No. Anyone? सामी आलम जी, यस सर. कौन होते हैं वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव? कुछ कमेंट करेंगे इसके ऊपर? साइट सुपरवाइजर सर. नो. यूनियन लीडर्स जिनको बोला जाता है. वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव वही हो सकता है दैट फ्रॉम द वर्कर्स टीम. आप सुपरवाइजर किसके? मैनेजमेंट के टीम से आ जाते हैं. सेफ्टी ऑफिसर की बात करें वो भी मैनेजमेंट टीम के पार्ट आते हैं. वर्कर Yes, sir. रिप्रेजेंटेटिव जनरली दैट बीइंग सिलेक्टेड बाय द ट्रेड यूनियन. ओके, या जो वर्कर्स यूनियन बोले जाते हैं. सो ही शुड बी वन फ्रॉम द टीम ऑफ वर्कर्स. वो वर्कर्स के टीम में से एक होना चाहिए. So Okay. a contractor, there are multiple contractors working on the site. So the represented from each of the contractor, they can also play They the can do same that. teams. They can do that. Okay, but मैनेजमेंट टीम से तो कोई नहीं होना चाहिए. No management team. Each and every contractors have their own, the senior one, the foreman, the supervisor, those who are the representing their contractor on the field. But they can be the representative of the worker. Legally तो वो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए. Okay. But they are working, they are just representing all the contractors, no? That worker of their contractors. Means right May we now we are consider? taking the trainings now. Okay. So we directly invite them. Okay, no Okay, issue. fine. Okay. It depends on the organization to organization. But Okay. in general, if you see what ILO says that worker representative, they should be selected from workers only. Okay, he should not belongs to any management team. वो management team से नहीं होने चाहिए. Okay. Okay. So keeping that in mind, हम आगे बढ़ेंगे. Okay. So the representative of the worker in undertaking to cooperate with the employer in the field of occupational safety and health. Representative of the worker is undertaking give adequate information on measures taken by the employer to secure occupational health and safety. May consult the representative organization about such information provided they do not disclose the commercial secrets. Okay, तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
For example, if the management team or the organization is conducting a committee meeting, okay, and during the meeting they told you that these are the new SOPs we are introducing. Along with that वो शायद से आपको कुछ कमर्शियल सीक्रेट भी शेयर करे, किसके साथ, रिप्रेजेंटेटिव के साथ. तो रिप्रेजेंटेटिव का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनता है, दे शुड शेयर द इंफॉर्मेशन कि क्या एसओपी फॉलो किया जा रहा है, बट along with that they should not disclose the commercial secret of the organization. ओके, कोई बिजनेस रिलेवेंट सीक्रेट्स अगर उनके सामने डिस्क्लोज किया गया है, रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट डिस्क्लोज दैट इन फ्रंट ऑफ द वर्कर्स. ओके, workers and the representative is undertaking are given appropriate training in occupational health and safety. Workers or the representative, as the case may be, the representative organization is in an undertaking, is in accordance with the national laws and practices, are enabled to inquire into and are consulted by the employer on all aspects of occupational safety and health associated with the work. So for this purpose, technical advice may by mutual agreement being brought in the from outside an undertaking. Okay, like so if like workers are and their representative, if you found they found any gaps in our operations, okay, and they know the solution. अगर उनको पता है कि हमें फॉर एग्जांपल हमने देखा एक ट्रॉली यूज हो रहा है, एंड वी सॉ वन ऑफ अ व्हील इज इन स्मॉल साइज, एक व्हील जो है वो छोटा है, जिसकी वजह से जब आप लोड कैरी करते हैं वो अनस्टेबल होता है. सो एज द वर्कर नो कि हम यहाँ पे व्हील रिप्लेस कर सकते हैं. सो वर्कर शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, ओके, या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे किसके, अपने मैनेजमेंट टीम से, जो इमीडिएट सुपरवाइजर से उनको रिपोर्ट करेंगे. दे कैन गिव ए रिकमेंडेशन, देखिए ये व्हील जो है वो एक छोटा है, वी शुड रिप्लेस इट. ओके, एंड बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट, लाइक क्यों रिप्लेस करना है, ये सारे कन्वर्सेशन होगा इन बिटवीन द मैनेजमेंट टीम एंड वर्कर्स. एंड along with the mutual agreement they should bring that control measure at place. लाइक ये जो डिसीजन हुआ शायद से मैनेजमेंट एग्री कर जाए, हाँ हम विल रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसको विल रिप्लेस करेंगे. ओके, बट यू शुड रेकमेंड, अगर आपके माइंड में कुछ है, सो एंड सो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, so as a worker or as a workers representative, I should represent in front of the management team. I should not keep it in mind only. अगर मुझे कुछ पता है, ऐसे भी आपने वर्कर दिखा रहेगा, हो रहा है तो होने तो कंपनी की गलती, हमारा क्या जाता है, ऐसे भी आपने वर्कर्स देखा रहेगा. ओके, इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स यू आर ब्रेकिंग द लॉ. ये जो मैंने व्हील्स का एग्जांपल दिया, ये आपके एक पुराने सिनेरियो में है. ओके, लाइक वर्कर नो कि ऐसा कुछ चीज है, like after the accident they are discussing these are the condition, this was the reason for the accident. okay, ये सारी चीजें जानने के बाद भी वो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया था. they know what was the solution but still they are not reporting. आपने यहाँ पे सेम चीज आपने इफ यू सी सैंपल सिनेरियो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे भी क्या हो रहा है, जब वर्कर्स के साथ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर कंसल्ट करता है, वर्कर सजेशन देते हैं, they know that we should reverse the car at the car parking area only. So while worker know about it, they should report it to the management. हम ऐसा solution ला सकते हैं, right? So these are the these are the obligation placed upon the worker which might be contravened in sample scenario. Next, a worker forthwith to his immediate supervisor any situation which he has reasonable justification to believe present an immediate serious danger to his life or death. Until the employer has taken remedial action, if necessary, employer cannot require worker to return to the work situation when there is a continuous imminent or serious danger to his life or health. Okay, वर्कर्स के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो ऐसा कुछ सिचुएशन देखते हैं जैसे कि कोई फायर इवेंट हो गया, एंड एज ए वर्कर यू डू नॉट नो कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, सो यू शुड रिपोर्ट योर इमीडिएट सुपरवाइजर. इमीडिएट सुपरवाइजर कौन होते हैं, जिस सुपरवाइजर को आप इमीडिएटली रीच कर सके, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर का हो क्लाइंट का हो, जिसको आप इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं. यू शुड कॉल देम, यू शुड लेट देम नो द सिचुएशन, एंड यू शुड नॉट गेट बैक टू द वर्क अंटिल द इशू इज रिजॉल्व. जैसे कि फायर हुआ, आपने देखा कॉन्ट्रैक्टर को सुपरवाइजर उनको रिपोर्ट कर दिया, और आप तब तक वहां पे रिटर्न नहीं जाएंगे एज ए वर्कर जब तक फायर जो है कंप्लीटली शट डाउन नहीं हुआ. और ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे, मैंने इस सिचुएशन में मैनेजमेंट जो है वो फायर डिपार्टमेंट को पूछेगा, इफ फायर डिपार्टमेंट अलाउ टू स्टार्ट द वर्क देन ओनली दे शुड रेज्यूम इट. Okay, so that's the obligation placed upon worker.
Is it clear? The Article 19 of ILO Convention C155. Yeah. Yes, sir. Next, the arrangement provided in Article 19 of Convention should aim to ensure that workers should take reasonable care of their own safety and that of the other person who may be affected by their act or omissions at work. ओके सो यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद का भी ख्याल रखें, साथ ही साथ दूसरों का भी ख्याल रखें जो कि उनके काम के वजह से इफेक्ट हो सकते हैं. कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर their own safety and health and those of other with the safety and health process. Use safety devices and protective equipment correctly, do not render them inappropriately. Workers के ऊपर ये भी responsibility है. Safety devices, it's like your PPEs, okay, and guarding that have been provided for the machineries. You should use them appropriately. जैसे कि आपने multiple time example देखा रहेगा, workers क्या करते हैं, they wear the PPE, बाद में उतारे ऐसे ही फेंक दिए चलते हैं, okay, which is not acceptable. So जिस कंडीशन में आपको मिला, wear the PPE, काम खत्म हुआ, पीपीएस को सही जगह पे हैंग करके जाएंगे. अगर वॉशिंग की रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ड्री में देके जाएंगे. ओके, यू शुड नॉट रेंडर देम ऐसे इफेक्ट के नहीं जाए. रिपोर्ट forthwith to the immediate supervisor any situation they have the reason to believe could present a hazard and they cannot correct by themselves. ऐसा कोई सिचुएशन अगर वर्कर्स देखते हैं, okay, they should report to the immediate supervisor जो कि वो खुद रिजॉल्व ना कर पाए. रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट, इंजरी और इल हेल्थ which arise in the course of or in the connection with the work. अगर वर्क रिलेटेड कोई इंजरी या इंसिडेंट अराइज होता है, okay, they should report it. Okay, so these are the obligations placed upon workers. Is it clear to you all? The obligation placed upon workers and obligation placed upon employer. आप लोग एक बार रिविजिट कर लेंगे तो आपको गैप एनालिसिस में आसान होगा. ओके, एंड सेम थिंग आपसे स्टडी मटेरियल में भी वही है. ओके, कुछ अलग नहीं है, वहीं से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया गया. ओके, और मैंने जो आपको एलिमेंट 1 to 4 के कंबाइन ये समरी देख लेंगे. ओके, समरीज खुद से गो थ्रू कर लेंगे, फिर भी मैं रीड कर लेता हूँ. टू मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ILO प्रोवाइड SSOW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. SSOW में आपके सारे चीजें आ जाते हैं. आपका PTW हो गया, आपका रिस्क असेसमेंट हो गया, आपका मेथड स्टेटमेंट हो गया, आपका JS, ये सारे आपके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंडर आते हैं. ओके, अगर इसको इन डिटेल इन एडवांस जानना है तो आप एलिमेंट 3.6 एक बार विजिट कर सकते हैं, जो कि पूरा कंप्लीटली SSOW को लेकर है. ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड सेफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोवाइड सेफ वर्कप्लेस, provide IITS, where IITS stands for, I stands for information, another I stands for instruction, T stands for training, S stands for supervision. Okay, provide PPs, made organizational arrangements, provide working hour and rest break, reduce excessive physical and mental fatigue for the workers, keep up to date with the knowledge. Okay, and when we not met, no SSOW, no safe plant and machinery, no safe place to work, no IITS, no PPs, no organizational arrangement, no working hours or rest break, excessive physical and mental fatigue, no up to date with the knowledge. Okay, ये ओवरऑल समरी है. आर्टिकल नंबर 19 एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन हमने पढ़ा. नेक्स्ट इज these are the common source of international or national standards which help you to know about the which help you to stay up to date about any legislative changes. Okay, like ILO convention and recommendations. Okay, जो कि मैंने अभी लिंक शेयर किया, वहाँ पे कन्वेंशन रिकमेंडेशंस के कम एक्सेल फाइल है, वहाँ पे डिफरेंट कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस के बारे में मेंशन है. आप उसको एक बार रिविजिट कर सकते हैं. HSC गाइडलाइन hsc.gov.uk, European Agency for Safety and Health at Work, okay, which is a Spain body. Occupational Health and Safety Administration, OSAS, which is a USA body. Institute of Occupational Safety and Health, which is known as IOSS, again, which is a UK body. WorkSafe, Western Australia. British Safety Council, again, which is a UK body. Code of practices like approved code of practices or ILO code of practices. European and British standards. HSC publication or approved code of practices. Okay, CCOHs, Canadian Center for Occupational Health and Safety. IIRSM, International Institute of Risk and Safety Management. Okay, these are the common international standards which help you to up to date with the legal requirement or legislation requirements.
एंड अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें, आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन a network of national standard institute of 162 countries, with this central secretariat that based on Geneva, Switzerland. Okay, so ISO UK based bodies again. Okay, ISO 9001, which is about quality assessment, 14001 environmental assessment, 45001 2018. ये हमारा एक और टॉपिक होने वाला है एलिमेंट 2 में. Okay, ISO 45001 2018, which is on health and safety management system, and ISO 50001 is on energy management. Okay, हम 45001 आगे जाके कवर करने वाले हैं इन एलिमेंट 2. अगेन इफ यू वांट, आप एडवांस में आपके पास मटेरियल है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. ओके. Yeah. Wait a minute, please. Sorry to make you waiting. Yeah. So here we are completing element 1.2. Okay. Now, is it clear to you all about the obligation placed upon employer, obligation placed upon workers? Okay. Is it clear? Any questions on it, please? Yeah. Say yes or no, please. No, sir. So now what we'll do ना, हम ये तो पुराने क्वेश्चन है, ओबी नंबर 5 या बैकरी सिनेरियो के जो क्वेश्चन है ये पुराने क्वेश्चन है. हम कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं. ओके. जो रिसेंट ओबीज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और सो दैट कल आप पढ़ के आएंगे तो हम और डे आफ्टर टुमारो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. आईएलओ रिकमेंडेशन R164 कन्वेंशन 755 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. ओके. हम जो मोस्ट रिसेंट आया उसको देखेंगे. ओबी नंबर 58 जनवरी. ओबी नंबर 53 देखेंगे. अगस्त 25 को ये क्वेश्चन आया था. ओके. एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन. Employers have obligation on recommendation 10 A, B, C, D, E, and G of International Health and Safety Recommendation R164. Comment on how employer obligation may not have been followed by the owner of टी टाइम. टी टाइम एक कैफे शॉप को लेकर सिनारियो है. तो टी टाइम में एम्प्लॉयर ने इन ऑब्लिगेशंस को कैसे फॉलो नहीं किया है उसके ऊपर हमें बताना. ओके. सो इफ यू सी, हमें हमें आईएलओ रिकमेंडेशन क्या बोला है इन्होंने? A, B, C, D, E, and G, right? So what are the obligations in A, B, C, D, E, and G? I'll recommendation around 64, recommendation number 10. So from that scenario, you have to identify how the tea time failed to provide safe workplace, safe machinery and equipment, safe work methods. Okay, कैसे follow नहीं किया? That you have to identify from the scenario. How they have failed to provide necessary instruction and training. अगर डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स के एबिलिटीज को देखते हुए कैसे इन्होंने सही इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग नहीं दिया है. हाउ दे फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट सुपरविजन. उन्होंने कैसे सुपरविजन नहीं दिया. हाउ दे फेल टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट लाइक वर्क प्लेस के कंडीशन, साइड्स ऑफ द वर्क, साइड लाइक वर्किंग एनवायरनमेंट. इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे इन्होंने एडिक्वेट अरेंजमेंट नहीं दिया. ओके.
how they failed to provide adequate PPE for the worker, and how they failed to take eliminate excessive physical and mental fatigue for the workers. ये सारी चीजें कैसे फुलफिल नहीं हुए वो आपको सर्च करना है फ्रॉम दिस ओबी. विल यू ऑल एबल टू डू दैट? व्हाट यू ऑल हैव टू डू ना, आप ये आइडेंटिफाई करके रखिए. सिनारियो पढ़ना है, ये आइडेंटिफाई करके रखना है, ताकि नेक्स्ट जब हम क्लासेस में आएंगे तो उसका ग्रुप डिस्कशन में रिजॉल्व करेंगे. ओके. और एक जो वर्कर का ऑब्लिगेशन का वो एक आप होमवर्क कर लेंगे वो में. यहाँ पे देखेंगे ओबी नंबर 32 वाला, ये वाला असाइनमेंट आप ऐसे होमवर्क करेंगे आप लोग. ओके. रिकमेंडेशन 16A एंड 16C 4 मार्क का क्वेश्चन है. आई थिंक सबके लिए इजी होगा थोड़ा भी. ओके. 16 आईएलओ रिकमेंडेशन R16 पर रिकमेंडेशन 16 किस चीज को लेकर है? इट इज अबाउट ऑब्लिगेशन प्लेस्ड अपॉन वर्कर्स, राइट. वर्कर्स के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है उसको लेकर है ये क्वेश्चन. सो व्हाट आर द ऑब्लिगेशन इन 16A? Like from here you have to identify how the workers fail to take reasonable care for their own safety and other person who may be affected by their act and omission, and see how the safety device or protection equipment were not correctly used. Okay, आप चाहे तो obligations लिख के लिख सकते हैं. You have to use the key points from these arguments only. की पॉइंट्स इन आर्गुमेंट से यूज करना है, ये गैप्स को आइडेंटिफाई करना है सिनेरियो में. बाकी एज यूजुअल हम जैसे पी प्रिंसिपल फॉलो करते थे वो फॉलो करते हुए आंसर लिखना है. ओके. सो ये ट्राई कीजिए खुद के बेस पे. ओके. 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क ट्राई कीजिएगा. और ओबी नंबर 50 कौन सा बोला मैंने? अगस्त 24 का ओबी ना, सॉरी अगस्त 25, अगस्त 25 का ओबी आप पढ़ के आएंगे. ओके. देखते हैं हाँ. ये है आपका ओबी नंबर 32 टास्क 3. टास्क 3 होमवर्क है. ओके. वाला ओबी नंबर 51 बोला था. नहीं नहीं पे था, टी टाइम का था ना. सर 58 बोला था शायद से आपने. 53 दिस वन. ओबी नंबर 53 दिस वन ना, टी टाइम कैफे. टास्क 7 ओबी नंबर 53. ये आप लोगों के लिए ग्रुप असाइनमेंट रहेगा. ओके. तो ये पढ़ के आएंगे. ओके. कल एक दूसरे बैच को कमिटमेंट है तो उनका क्लास रहेगा, तो कल आपकी क्लासेस तो नहीं रहेंगे. बट जिन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली असाइनमेंट नहीं किया है, पेंडिंग असाइनमेंट काइंडली कंप्लीट इट. ओके. और एक बार सिलेबस को भी गो थ्रू कर लेंगे. अपडेट्स में मैं बार बार बोलता हूँ, एलिमेंट 1 to 4 का कंबाइंड पीडीएफ रख दीजिए, रेगुलरली उसको गो थ्रू कीजिए. ओके. मैं अभी थोड़ा स्लो जा रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट आपको ग्रिप करना है सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है. वंस वी क्रॉस ओवर एलिमेंट 2 एक बार क्रॉस हो जाएगा, देन हमारा जो लर्निंग स्पीड है थोड़ा क्विक हो जाएंगे. ओके. सो यहाँ पे हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, सो यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग. ओके. बाकी ये चीज मैं समरी में डाल दूंगा. So for today, due to some circumstances, we'll wind up the session here. Okay, आज थोड़ा short duration रहा session का. कल like from day after tomorrow onwards, will not do any such kind of thing. ऐसा कोशिश करेंगे कि कोई इसी तरह का ब्रेकडाउन ना हो बीच बीच में. ओके. और पॉसिबल हो सकता है दिस संडे हम क्लास रख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है. अगर संडे रहता भी है तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे एंड जल्दी क्लोज करेंगे. होप इट इज सर फाइन फॉर यू ना. सर हाँ बोलिए विश्वजीत.
काइंडली आप मेंशन कर देंगे ये जो भी टास्क वगैरह जो रहेंगे या होमवर्क होमवर्क टाइप फॉर हाँ मैं रेफरेंस के लिए कि हम इसे कल एक बार चेक कर लें। जी जी बिल्कुल, आई थिंक मैं समरी में डेली डालता हूँ। कल का अब समरी पर देखते हैं क्लासरूम में। ओके ओके, विश्वजीत, मैं एक बार वहाँ से भी चेक कर लूँगा। समरी में मैं डेली डालता हूँ, आज भी डालता हूँ, ठीक 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 है। है। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? No, sir. Okay, if there is no question, thank you so much for being patient student. Okay. Hello. Yes, शकीब जी कुछ पूछ रहे हैं Yes, शायद sir. से। सामी आलम जी हाँ, पूछ रहे हैं, प्लीज बताइए। no, sir. It's an emergency. I'm going to the outside. Okay. I leave the class right now. ओके, Oh, thank you, sir. ओके।